Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Tabad Lab Live. I am so excited to welcome Sister Zeph to Tabad Lab today. Sister Zeph has just won the Global Teacher Prize, the best teacher in the world. This is an annual prize awarded by the Varkey Foundation. And Sister Zeph was recently in Paris at the UNESCO headquarters to receive this amazing award and recognition. Every news outlet on the planet has already spoken to Sister Zeph, but let me first begin and say welcome to you and thank you for doing this with us. Thank you so much for having me the opportunity to be here today. It's a very exciting thing anytime a Pakistani is able to showcase all the amazing things that are happening in this country. I know that so much of the media that's already engaged with you has asked you a lot of questions. So I thought maybe we'd start with what they've already asked you. What have people been asking you so far? They want to know how I started my journey and how I have reached this level, how I made it possible for 26 years. Yeah. I think the reason I start with that is because you've given that answer so many times. I think I'll ask people that are watching to go and Google Sister Zeph, and there's, I think, dozens, maybe hundreds of interviews in which she lays out her personal story and the journey. She started at 13. It's an amazing story. Go and check it out. But today, Sister Zeph, I wanted to, well, maybe before we even get into I want to talk about learning, right? And बच्चे किस तरह सीखते हैं, ये जो सीखने का अमल है, हमने भी एक इस पे कोशिश की है, आज क्या सीखा के नाम से. And we're really trying to unpack this learning thing. What is learning, right? It's like a black box. जो मेरा ख्याल है कि हम में से बहुत लोग, मुझे खुद, हमें समझ ही नहीं है, और हम वो education की बात करते हैं, and we lose the focus on the learning part. So that's what I want to talk to you about. But before we start, what is this Sister Zeph business? Because I know that's not your legal name. And I'm not allowed to say your legal name, but... Yeah, you are not. So what is, where did Sister Zeph come from? I gave this name to myself because the name of my NGO is Zephaniah Women's Education and Empowerment Foundation. Its abbreviation is ZWE Foundation. I have taken Zephaniah from Bible because it means protected by God. Okay. And I gave this name to myself because when people call me Sister Zeph, I feel it creates a connection. And whenever you want to make a difference, first, you have to make a connection with people. And it makes me feel closer with them. It builds a trust with them. Also, it's a unique name. There is no else Sister Zeph on the planet. So it's very easy to remember my name, to Google me, to know about my work, all that. ये जो आपका फहम है, this, what you just described, and I'm sure people watching, मैं भी इधर मैंने तालीम पूरी नहीं, लेकिन कुछ अरसा मैंने अपना पहले ओ लेवल्स किया, फिर FSC पाकिस्तान में किया. बचपन में भी क्लास 1-2 में थोड़े अरसे में कराची में तालीम हासिल की. I was lucky. I had a few really good teachers here and abroad, जहाँ पे मैं ज़्यादातर उम्र मैंने गुजारी. But I'm not sure I had a teacher who had the self-consciousness, awareness, ambition, intuition to come up with a name and to describe it in the way you did. So, I know we agreed we wouldn't talk about your journey, but I'm compelled to ask you, where has Sister Zeph come from in terms of the way she thinks? ये जो जिस सोच की अक्कासी आपके इस जवाब में थी, वो सोच जो है वो कहाँ से आई? जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है दैट वाज मोर देन अदर्स, या फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी बचपन से ही. तो मुझे 7th स्टैंडर्ड में स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा बिकॉज मुझे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला. दैट वाज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी. मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ पे लर्न कर सकती हूँ. सो आई डिसाइडेड टू लीव दैट स्कूल. और जो मैंने अपना स्कूल बनाया इन द कोर्टयार्ड ऑफ माई हाउस, उसकी वजह ये थी कि मैं ये चाहती थी कि जो बच्चे हैं, नो मैटर यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, नो मैटर यू डोंट हैव द रिसोर्सेज,
सिर्फ एक चीज़ बच्चे को स्कूल में रख सकती है, सिर्फ एक चीज़ बच्चे को पढ़ना सिखा सकती है, उसको इनकरेज कर सकती है डेली स्कूल आने में, एंड दैट इज़ द लव, द रिस्पेक्ट फॉर अ चाइल्ड. और बच्चे को मैं एज ए टीचर मेरा ये काम नहीं है कि मैं बच्चे को ये बताऊं दिस इज़ अ बुक, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू मेमोराइज इट. नो 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 नो, माई जॉब इज़ टू मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड why he or she was born, what is the purpose of his or her life. हमें उसका जो पर्पस है उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाना है. आई एम लकी बिकॉज मैं बहुत अर्ली एज में समझ गई थी कि मैं क्यों इस दुनिया में आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ. दैट इज़ टीचिंग, नॉट ओनली टीचिंग बट एक टीचिंग के बारे में जो आम एक पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करना. अगर आप मेरे स्कूल में विजिट करें तो आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आएगी. मैं किसी भी क्लासरूम में जाऊँ, माई चिल्ड्रन आर स्माइलिंग, व्हेन दे लुक एट मी दे स्माइल, दे फील कॉन्फिडेंट, दे फील प्रोटेक्टेड, and they ask me questions. So this feel protected, and you described the kind of biblical origin of your name. I think we have to be comfortable talking about faith. And you have one faith and I have a different faith, but I feel connected to you already because of our faith. It's not the same faith, but we both have faith. And I think what happens with faith is this sense of purpose जिसकी आपने बात की ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा, I don't know if you can tell from my face, or like it's to me at least one of the big failures जो और ये development में, public policy में और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फोकस हमने क्वांटिटेटिव चीज़ों पे कर दिया है. 25 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं. बिल्कुल मैंने इस पे खुद बहुत काम किया. But I'm not sure that is going to solve the problem, to remind people. I mean, it's an important element, maybe. But if people don't feel a sense of purpose, and especially if a child doesn't respect themselves, which is, I think, what you're trying to do, is to kind of create an environment where if you respect the child, maybe the child will respect themselves, maybe they'll connect to a sense of purpose. So ye jo journey, like when you were 13, obviously this was more raw. तो इसका जो फॉर्मेशन है या जो एवोल्यूशन है आपकी सोच में, जो गहराई और जो मैच्योरिटी बढ़ती रही, उसके बारे में just walk us through a little bit. I mean, you must have had people that were supporting you that helped you flourish as a teacher and a protector of children. How much of that is attributable to the church? I think church is my personal thing. Okay. I have always been, it has been a goal of my life to, when a child is in a school, that is just a child. Yeah. No matter what is their financial background, no matter what is their religious background, I have to treat that child just as a child. And that child belongs to me. It's my child. A teacher is a mother. Yeah. Because a mother, a biological mother and a teacher are working on the same purpose. They are helping their child to have a better future. तो मैं तो बच्चों को ये रिलीजियस बेस पे तो मैं नहीं करती हूँ. चर्च का इसमें स्कूल की साइड पे अगर देखा जाए तो आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ वेरी प्राउड क्रिश्चियन, लेकिन जो मेरा पर्पस है टीचिंग का, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. नो, आई अंडरस्टैंड. मैं पूछ इस सवाल से रहा था, and I mean, I think you've answered the question, but I almost feel like if you have a higher sense of calling, whether you're a Catholic or a Protestant or a Sunni or a Shia or a Hindu, and we have all these beautiful, I think, expressions of faith and belief in our country. I'm sure even in your schools you have all kinds of religious backgrounds, but I think that it's that connection जिसका जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ है, जिस ट्रेडिशन से ताल्लुक़ है, वो जो कनेक्शन है खुदा के साथ, कायनात के साथ, वही चीज़ जो है पर्पस. नॉट टू से कि जिन लोगों का यकीन नहीं है उनका नहीं होता होगा, लेकिन एज समबडी हु बिलीव्स हिमसेल्फ, I feel like an immediate connection with this idea that we have to connect people with a sense of purpose. आपको लगता है कि we're all celebrating your victory, and when people are successful, everybody rushes to you. मैं आपको कह रहा था that I think it's a shame
that many people working in Pakistan in education didn't know about you until this prize. I mean, certainly I don't know about many people, but मेरे लिए एक तरह से, shame on me that I didn't know. In this rush where people are coming to you, आपको लगता है कि लोगों को समझ आ रही है कि what you've built has been built through this very deep sense of purpose? Or is the conversation mostly superficial? Do you feel like you're being able to communicate and share this with people in the way that maybe I think it needs to be shared? I don't think so. Because mostly लोग मेरे पास आते हैं because they want to break this news. और वो ये चाहते हैं कि फ़लान चैनल ने सिस्टर ज़ैफ का इंटरव्यू किया, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है. बट वो पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं. और 99% लोगों ने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया होता कि हु इज़ सिस्टर ज़ैफ एंड व्हेन शी स्टार्टेड हर जर्नी एंड व्हाट शी हैज़ अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग ऑल द 26 years. सो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक वो मैसेज कन्वे कर पाई. Well, let's try and unpack that and see if maybe at least इस हद तक आज की जो conversation है, maybe we can do that. You mentioned 26 years and you started very young, which 1997. Yeah, which it's a remarkable journey. As a teacher, I think two things that I'm really interested in. Let's start with the first, which is the child. 1997 में जो बच्चा सीख रहा था या आपके पास आ रहा था या बच्ची, they were dealing with a different set of inputs. उनके घर में हालात भी बड़े different रहे होंगे आज के बच्चे में. Just walk us through the difference between what the child is and what the challenge is from when you started to now. उस वक्त के जो बच्चे थे they were very simple. और जब उनको किसी उनके सवाल का जवाब मिलता था तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे. आजकल के जो बच्चे हैं they already have enough knowledge. और उनको बुक्स की ज़रूरत नहीं है. उनको sometimes ऐसा फील होता है they don't need even a school. They already know many things. Although the children who I work with, they are different because they belong to the underprivileged families. Most of them have a background where their parents don't have an education. But अब मुझे लगता है कि teaching थोड़ी आसान हो गई है. I always say, because I don't know if you know that I never went back to a school after 7th standard. I taught myself. Yeah. And then you went and got yourself at least 2 master's degrees? Yes, I did. Through self-studies. Yeah. I got 2 master's degrees from University of Punjab, Yeah. private student. So now it's easier. I always say Google is my teacher because whatever is the question, Google is the answer, in my opinion. लेकिन Google पे जब आप जाते हैं तो आपको ये वाली भी आपके पास सेंस होनी चाहिए कि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, इज़ इट द राइट थिंग और नॉट. तो फिर चीज़ों को कंपेयर भी करना पड़ता है. तो एक जो टीचर होती है ना, उसके लिए मुझे इस चीज़ का भी बड़ा इख्तलाफ होता है कि एक टीचर ने B.Ed किया आज से 10-12 साल पहले एंड शी इज़ कॉन्टीन्यूसली टीचिंग द चिल्ड्रन. वो वाले बच्चे जिन्होंने आज से 10 साल के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, टीचिंग में आपको कॉन्टीन्यूसली खुद को अपडेट रखना होता है. और मैं ऐसा ही करती हूँ. और फिर मैं जो दूसरी टीचर्स होती हैं मेरे स्कूल की, उनको मैं हर 10-15 दिन के बाद वो बताती हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इन द वर्ल्ड. तो अब आसान है, पहले डिफ़िकल्ट था, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी बिकॉज आई बिलोंग टू अ वर्किंग क्लास. देयर वाज नो फाइनेंशियल सपोर्ट, देयर वर नो बुक्स एट माई होम, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी. सो आई वुड वर्क एज ए चाइल्ड, आई वुड make money like 40 rupees or 30 rupees a day, and I would buy books, I would read newspapers, I would get knowledge from the news channel. There was PTV only at that time. So that it was difficult, but I enjoyed it a lot, and my children would also enjoy it because they had no other source to get knowledge. And now that has changed a lot, and they have access to many more sources. With this additional information, मैं इसको अक्सर कहता हूँ, there's an information overload. It's not just that बच्चों को knowledge मिल रही है, बच्चों के ऊपर एक तरह से डेटा और इन्फॉर्मेशन की बमबारी भी हो रही है. लोग अपने एप्स के थ्रू उनको चीज़ें बेच रहे हैं, आइडियाज़ बेच रहे हैं, कंटेंट बेच रहे हैं. Are there any negative effects that you have to deal with in terms of how children are having to essentially absorb a lot more information? 97 में तो you're right, मतलब बड़े अच्छे दिन थे because you didn't
you just like very simple is the right word. आप खेलते थे, कूदते थे, and you didn't have to deal with. Abhi, I see little children having to deal with what's happening, for example, in Gaza, in Palestine. Even domestically, जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल से जो हालात जैसे भी हैं, kids didn't have to deal with this before. So how do you help kids deal with this additional burden? जिन बच्चों में मैं काम करती हूँ, दे आर ऑलरेडी ट्रामाटाइज्ड. क्यों? बिकॉज उनको अपने घरों में वायलेंस देखना होता है, फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता है, अपनी मदर को देखना पड़ता है, मेंटल टॉर्चर है, पीपल शाउट ऑन ईच अदर वहाँ पे. अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी. मेरा बेटा है 3 साल का. चंद दिन पहले मैं एक फैमिली मेम्बर से बात करी थी, तो मैं ऊंचा बोली, जैसे अभी आप बता रहे थे. तो मैंने उसको देखा कि वो बहुत डर गया और उसे समझ नहीं थी आ रही कि वो किधर जाए. और बाद में मैंने ऑफ कोर्स उससे कई दफ़ा मुझे उससे सॉरी करना पड़ा. लेकिन वहाँ से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब आप अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे तो इट्स ओपन. तो वो बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी ट्रामाटाइज्ड हैं. ऊपर से सोशल मीडिया से हर चीज़ पे उनको एक्सेस हासिल है. बच्चे इसको डील नहीं कर सकते. बट इन दैट सिचुएशन जो टीचर्स हैं, जो स्कूल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है. दे हैव टू पैम्पर द स्टूडेंट्स. मैं जब अपने स्कूल में जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को हग करती हूँ, मैं उनको एक अपनायत देती हूँ, मैं उनको बहुत प्यार से मैं उनको टच करती हूँ और मैं उनको ये एक फीलिंग देती हूँ कि दुनिया में जो भी हो रहा है इट्स ओके, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेरे पास हैं, यू आर सेफ. तो जब हमें एक अपनायत का एहसास बहुत ज़्यादा मिलता है ना, तब भी जब दुनिया में जो भी हो रहा होता है बच्चों को उसको डील तो करना ही है. यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए उनको तैयार भी करना है, उसके लिए हमें उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है. One thing that I'm kind of really blown away by is, and you can't fake this, is this sense of protection that, and I think it maybe connects with your choice of name and, again, anchored in that sense of purpose, but to protect kids from all of this and to also to prepare them to deal with this. I think it's a profoundly difficult task. My mother and my sisters are also teachers and have been throughout their lives, and I see a reflection of you and them and you. तो मैं इमोशनल भी जल्दी हो जाता हूँ. तो anyway, एक जो task for my mother, who runs a school and has been doing it for 30 years, one challenge that I know she has is she's very lucky, I think, that she is able to work with people like her. So she's found many teachers who've been with her for a long time, really good. But to find more is always a challenge. एक हमने अभी बात की about the student or the child and how different they were in 97 and now. What about the evolution of teachers? के जो उस्तानी या उस्ताद जिनके साथ आप काम करते थे in 2003-04 और अब 20 साल बाद जिन बच्चियों को, क्योंकि वो उस वक्त पैदा 97 में जो लोग पैदा हो रहे थे वो अब आपके साथ काम कर रहे हैं. 2 चीज़ें बताएं. एक तो शायद मज़े का सवाल है कि आपके अपने स्टूडेंट्स में से कितने ग्रेजुएट करके अब आपके साथ काम कर रहे हैं. And then tell me a little bit more about this evolution of the nature of the teacher, if there has been any in the last 25. मेरे 90% जो टीम मेंबर्स हैं, I have 30 team members now. तो 90% जो है they are my former students. Yeah. Even the principal of the school is my former student. I have a vocational center, वहाँ पे भी जो लड़कियाँ हैं वो मेरी स्टूडेंट्स ही हैं. तो अभी कि जो टीचर्स हैं उनके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तो हमने एजुकेशन को भी वही बना लिया है. इवन जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो उनको भी हम यही सिखा रहे होते हैं, करियर काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं. तो उसका मकसद ये नहीं होता कि हम बच्चे की जो अपनी उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके मुताबिक उसको गाइड करें. हम उसको ये बता रहे होते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप ये बिज़नेस कर सकें, ऑल दैट. टीचिंग जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ इट्स नॉट ए प्रोफेशन. ठीक है, आप इसको चूज़ नहीं कर सकते हैं. टीचिंग हैज़ टू चूज़ यू. टीचर्स आर बॉर्न टीचर्स. यू कैन नॉट प्रोड्यूस टीचर्स, यू कैन नॉट मेक टीचर्स. हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार नहीं कर पाए हैं जहाँ पे
जो टीचर्स हैं जिनका पैशन है टीचिंग, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि दे आर द फ्यूचर मेकर्स, वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, दे आर द नेशन बिल्डर्स, जिनको हर वक्त ये ख्याल रहे, जो अपने टीचर्स, जो अपने स्टूडेंट्स के साथ कंप्लीटली उनका एक कनेक्शन हो। देखिए शायद आपको ये बड़ी वो फैसिनेट सी बात लगे और आपको ये लगे हाउ इज़ दैट पॉसिबल, वी हैव आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। आई डोंट हैव माई पर्सनल लाइफ। आई हैव डिवोटेड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर माई स्कूल। इसीलिए 17 साल तक without any financial support, I have been working for 8 hours. I have been teaching my students for 4 hours. I have been teaching myself for 4 hours. And I would sleep only for a couple of hours because teaching is my passion. So we need passionate teachers. It's okay. अगर आपके पूरे स्कूल में आप उस तरह के टीचर्स नहीं ढूंढ सकते, एटलीस्ट द हेड ऑफ द स्कूल, उसको ऐसा होना चाहिए। अगर वो ऐसा होगा तो हम स्कूल में बच्चों के लिए कैसा माहौल पैदा कर सकते हैं, जैसा मेरे स्कूल में है, जहाँ पे बच्चों को आके खुशी मिलती है। तो पैशनेट टीचर्स, अगर आपका पैशन है टीचिंग, देन बिकम अ टीचर। अगर आप का मकसद जॉब ढूंढना है, देन आई सजेस्ट चूज समथिंग एल्स। Yeah, I think it's an interesting, and again, I think it reflects very obviously in some of the challenges we as a country face in terms of managing an education system. हमने इसको बहुत मैकेनिकल सा बना दिया है। इतने अब आजकल जो कुछ हमारे दोस्त हैं जिन लोगों को मैं एडमायर करता हूँ, दोस्त भी नहीं कहूँगा, मैं उनको उस्तादों में समझता हूँ। एक हैं जो आजकल बात कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे टीचर भर्ती होने हैं, कई हज़ार, इन सम केसेस लाखों टीचर भर्ती होने हैं। अब अगर वो भर्ती का तरीका एक तरह से मेरिट की, हम पहले तो मेरिट पे भी नहीं होता था, अब पिछले चंद सालों से मेरिट पे है। लेकिन you're right, just being that somebody is good at math and English or chemistry will not necessarily make a good chemistry teacher, is I think kind of the message. But this also means that in a sense, can we run the education system the way it's currently run? Because it sounds to, from what you're saying, कि unless के एक community में, चाहे वो एक स्कूल हो 10 स्कूल हो, उस कम्युनिटी के लोग उस स्पेस को ओन ना करें, तो फिर इस तरह के टीचर तो मतलब दरख्तों पे तो नहीं उगते, you know. So have you thought about how, if you were forced to, or if you had the opportunity to scale, आज आपके पास 30 टीचर हैं, if somebody said कि you have to find 3,000 teachers, have you thought about how that would look, what process you would follow? उससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं बीएड करती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी। मैंने वहाँ से बीएड की क्लासेस लेना शुरू की और कुछ वर्कशॉप्स में अटेंड कर रही थी। और वहाँ पे जो प्रोफेसर्स आते थे, दे कॉल देमसेल्व्स पीएचडी, और वो कभी भी अपने लेसन के लिए प्रिपेयर नहीं होते थे। वो आते थे, टाइम पास करते थे, इधर उधर की बातें करके वो चले जाते थे। मुझे बहुत उस वजह से स्ट्रेस होता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये टीचर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको वो क्या सिखा रहे हैं। मसलन ब्रेक के टाइम में हम ग्राउंड में बैठे हुए हैं और ऑल ऑफ देम आर टीचर्स, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन द स्कूल्स, और वो सारा ट्रैश जो है इधर उधर वो फेंक रही हैं। और मेरे साथ एक टीचर थी, वो मुझे कहती हैं कि एवरीबडी इज़ डूइंग द सेम थिंग, तो आप भी ऐसे कर सकती है। तो मैंने कहा आई एम नॉट लाइक दैम। मतलब अगर जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स को टीचर्स बनाने वाले हैं, अगर वही सिंसियर नहीं है, उनको ही नहीं पता कि हम उनको क्या दे रहे हैं, तो आगे जो टीचर्स जिन्होंने जाना है फील्ड में, वो क्या करेंगे? ठीक है। और जहाँ तक आपके इस सवाल की बात है कि किस तरह से मैं 3,000 जो टीचर्स हैं उनको मैं देखूंगी, मैं उनको क्लासरूम में लेके जाऊंगी, मैं उनको बोलूँगी कि आप कुछ दिन बच्चों के साथ स्पेंड करें। उसके बाद मैं ना सिर्फ उनकी जो टीम होगी उनके इंटरव्यूज़ करूँगी कि उनका एनालिसिस क्या है, मैं बच्चों के भी इंटरव्यूज़ करूँगी कि उन्होंने उनका क्या एनालिसिस है। And then you'll make the decision. Yes. Yeah, I mean, I think this is, आपने यकीनन नाम सुना होगा। मुझे जो एक ऑब्वियसली वो अंडर प्रिविलेज के साथ नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा किरदार मिसेस कसूरी का रहा है पाकिस्तान में। एंड यू नो ऑब्वियसली इट वाज अ प्राइवेट सिस्टम, बट आई थिंक रियली पाकिस्तान की पूरी जो मिडिल क्लास है शहरों में ख़ास तौर पे, वो अगर मिसेस कसूरी ना होती तो शायद मुल्क जो है वो यहाँ ना होता। और उनका भी जो मैंने उनको स्टडी किया, उनसे बातचीत की,
तो उधर भी मुझे यही नज़र आता है that her principal task or challenge, I should do this with her, but it is finding teachers that you can relate to and that you can trust. ये जो आपकी इस वक्त 30 टीचर्स हैं, डू यू फील लाइक इनमें से ऐसे लोग हैं जो अगर आप उनको कहें कि अब हम गुजरांवाला से एक्सपैंड करके लेट्स से वजीराबाद या जेलम या लाहौर जा रहे हैं, तो यू कुड ask them to set up separate schools, or do you still think you need time to build up the capacity within your own team? दे आर प्रिपेयर्ड. कल एक खातून आई हुई थी मुझे मिलने के लिए, तो वो मुझे कहती हैं कि आपके लिए मैं बुके नहीं लेके आ सकी बिकॉज मेरे टीम मेंबर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बुके नहीं लेके आया. और मैं ये कह रही थी कि अगर मेरी टीम की लड़कियां होती, कुछ भी होता, वो ऑपरेशन थिएटर में भी होती, तो वहाँ से भी उन्होंने फ़ोन करके कह रहे थे प्लीज़ कोई बुके पहुँचा दो, द जॉब हैज़ टू बी डन. ठीक है, तो मेरी जो टीम है वो इस तरह की है. सारी की सारी लड़कियां हैं, बाइक्स भी खुद चला रही हैं गांव में, गाड़ी भी खुद चला रही हैं, और वो उनको मैं जो टास्क बोल देती हूँ वो इतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है कि जब मैं देखती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ. इट्स बेटर देन, आई मीन मेरी सोच से ज़्यादा वो अच्छा करती है. I think this is again an endorsement and a reflection of the. मुझे लगता है पाकिस्तान में हम एक टैलेंट के एटम बम के ऊपर बैठे हुए हैं और हम उसको we're not paying attention to it. And every time I hear, मैं खुद भी, you know, I have this privilege as well. The people that I work with, मैं उनको देखता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ ये किस तरह, और मुल्क के जो हालात हैं वो इतने ख़राब कैसे हो सकते हैं. So there's this big disparity. Tell me something. ये जो इस वक्त in a sense this kind of there is something in my mind. please. मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है. अब किसी को भी अपॉर्चुनिटी दें वो आपको हैरान कर देंगे. लाइक माई स्टूडेंट्स, दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, दे बिलोंग टू अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज, और दे आर डूइंग वंडर्स. I have a similar, I think, conviction or belief almost. And for me, it's almost like, to go back to faith. It's a part of my faith, I think, that people are not inherently incapable. They're inherently capable and good. And so it's really about opening up a channel and allowing them to be good, and then they'll be great. One thing that in a similar light जो मुझे लगता है कि एक झूठ जो बहुत कॉमन हो गया है वो ये कि हमारे लोग एजुकेशन के हक में नहीं है, हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करती. But it sounds to me like, just from your description, but I'll let you answer the question. What have you found in terms of, the support from communities, from families? Because certainly ये जो आपकी साथी हैं 30 जो टीचर्स हैं, they also belong to families. They're from the same dharti. They're from the same society that you and I are from. जो बच्चे आ रहे हैं वो underprivileged ज़रूर होंगे और वैसे उनको traumas होंगे, but they're being allowed, not just allowed to come, in many cases, somebody's supporting them, at least to get them to school. So just talk a little bit about the appetite for education within communities, that you work with. ये एक्चुअली दोनों ही चीज़ें हैं. जब आप अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ में जाते हैं, स्पेशली आजकल जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, गुजरांवाला में there are 23,000 children bounded in child labor. Okay. तो समटाइम्स ये मेरे लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है. बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे कभी स्कूल में नहीं गए, उनके पूरे ख़ानदान में कोई नहीं पढ़ा, और मुझे कई साल लगे कन्विंस करने के लिए कि सेंड योर डॉटर्स टू माई स्कूल. और एक गुज्जर फैमिली है, तो कोई भी उनकी फैमिली में नहीं पढ़ा था. अब उनकी 2 बेटियां जो हैं, एक कई साल तक टीचिंग करती रही मेरे स्कूल में ना, वो उसकी शादी हो गई, सो शी इज़ गॉन. अब उसकी छोटी बहन जो है वो टीचिंग कर रही है. तो अब मिला जुला रुझान है, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तफाक करूँगी कि अब लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एजुकेटेड. और फिर अगर कुछ लोग नहीं भी चाहते, समटाइम्स हमारे उधर एरिया में भी ये होता है, 15 साल की 16 साल की बच्ची की शादी कर देते हैं. इट्स कॉमन. जो हम स्टैटिस्टिक्स देते हैं दैट्स नॉट ट्रू, उससे ज़्यादा ही है. ग्राउंड रियलिटी उससे डिफरेंट है. लेकिन अब शायद हमें इस चीज़ को भी, वो जैसे मैं हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल सेट की कि जो
we are 4 sisters. तो हमें भी बहुत सारे challenges का सामना कर. Are you the youngest or the eldest or the middle? Second last. I'm the second last. तो मैंने अपने एरिया में एक एग्जाम्पल सेट की कि गर्ल्स आर कैपेबल टू डू वंडर्स. दे कैन डू एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स इफ यू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, इफ यू ट्रस्ट देम. Yeah. तो कोई एग्जाम्पल भी सेट होनी चाहिए. फिर हमें लोगों से बात करने की भी ज़रूरत है, उनको समझाने की भी ज़रूरत है. बट मोस्टली अब लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम याफ्ता हों. और सिस्टर ज़ेफ, मुझे ये भी लगता है that if the state was to provide what I think is people's right, for example, the kids in bonded labor, if you replace that income with a emolument or a endowment from the government, either through BISP or SAs, or there's many ways that you can replace that income, then people would be more willing. So I think a lot of the responsibility is on the state and on society to take care of those families and those kids जहाँ पे एक तरह से वो मजबूरी में जो है they're in that life not because they choose that life but because they don't have a choice. यहाँ पे गवर्नमेंट की सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमारी आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, गवर्नमेंट कितना करेगी. हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है. गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को नहीं कर सकती. लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि उससे भी होता है. बिकॉज मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ. ऐसे बच्चे हैं जिनको हम 10 सालों से 12 सालों से उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नोबडी एल्स टू मेक मनी इन देयर फैमिलीज़. तो दे आर गेटिंग एजुकेशन. सो यहाँ पे भी मैं गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, हर शहरी की जिम्मेदारी है. देयर इज़ एन इमरजेंसी इन द कंट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, 25 million children are out of school in the country. So this is your responsibility, this is my responsibility. We have to play our role, every individual, Some individuals much more than others, like yourself, Sister Zeph. I think you're such a gift to Pakistan and to the people of Gujranwala. And of course, not only do I pray for your continued success, but I also pray for more Sister Zephs. Maybe not the same name. There are many sisters. I know, and I think that we need to find them and we need to talk to them. इससे पहले कि यूनेस्को उनको ढूंढे, please. जी, exactly. मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका, not just for doing this, but for everything that you do and the energy that you bring. May Allah keep that energy at where it's at now, or indeed may it grow far and wide. And of course, I think we will, inshallah, I will visit your school, and we will also try to find a way to find those Sister Zephs and to find how, to the extent that we can support them, but also to connect them with government, because I honestly think, I love the spirit of some of your responses. I think we need to be positive. I think people do want to solve problems. And with leaders like you, I think we will. So I just wanted to thank you for making time and doing this with us. And I look forward to continuing to engage with you. Thanks a lot. But आपने मेरे से last question नहीं पूछा. That was very important for my cause. कि आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं? आपने बाहर मेरे से बोला. That's right. Let's let's. I'll tell you why I didn't ask you. I'll ask you, but I'll tell you why I didn't. Because I feel that government has become very good at disappointing people. So I don't want you to ask for something which maybe they're not going to be able to do. But please, let's lay it out, and we'll ask them. What do you want from government? I think I have set an example already that even if you belong to a working class, you have a potential to do something extraordinary. So now I can request the government and the people who want to, invest for the future. The prize money that has been announced by the Varkey Foundation, they're going to give me in 10 years. I thought I will use that money to buy the land for my school, because unfortunately my school is still in the rented building. Now I'm not able to buy a land. I can invest that money in making the building as I will receiving it. But now I need a land for my school, because now is the time to make my dream school. What is my dream school? My dream school is to bring underprivileged children who belong to really, really poor families, who do not have any opportunities, to bring them into one school, at least 2,000 students, to give them pure,
food, pure milk. You know, I was reading somewhere that 87% people in Pakistan can suffer with cancer because of the milk we are giving to our children. I want to give them pure milk, fruits, vegetables that we will grow in that land, and children will do it by themselves. The teachers from all over the world will come, will share their knowledge. These children will have the knowledge of all the cultures, all the religions, and they will have all kinds of knowledge that the children of elite class have an access to. So this is my dream school. We should do everything in our power to help build this school, and that's not a very big ask at all. That I think is eminently achievable. So to whatever extent we can pass this on, we will, but we'll also pursue it more directly. Gujranwala is, I think, one of the great wave of cities coming in Pakistan. You know, we always talk about Karachi, Lahore, Pindi, Islamabad, but Gujranwala is a huge city. There are others like it, like Multan, like Peshawar, like Quetta, like Sialkot, like Hyderabad, that are also very large, and they deserve the airtime and the space that they merit. This school, your dream school, would be a jewel, inshallah, for Gujranwala. So we absolutely will work on that together, hopefully. I'm glad you reminded me, and I'm glad you articulated this ask. I think it's a very important one. I'm grateful to you, Sister Zeph, for doing this, and like I said, for doing everything that you do. Thanks a lot. Thanks for being with us.